Hello everyone, welcome back to our lecture series of ring theory. We were discussing polynomials. Previous lecture में हमने polynomials की reducibility को डिस्कस किया और देखा कि किस तरीके से किसी given इंटीग्रल डोमेन पे कोई पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल होगा। हमने पर्टिकुलरली सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री के पॉलिनोमियल को डिस्कस किया और ये भी देखा कि अगर किसी फील्ड में जीरोज अवेलेबल हैं तो पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है, बट दैट वाज अ रिजल्ट फॉर 2 डिग्री और 3 डिग्री पॉलिनोमियल ओनली। ओके, फिर हमने बात की कि किस तरीके से रैशनल नंबर पर अगर कोई पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है तो वो इंटीजर्स पर भी रिड्यूसिबल होगा। ओके, इस लेक्चर में हम कुछ इरेड्यूसिबिलिटी टेस्ट को डिस्कस करेंगे और पर्टिकुलरली हम मॉड पी इरेड्यूसिबिलिटी टेस्ट को डिस्कस करेंगे। Okay, so to discuss this we will state a theorem, and this theorem is 17.3 which discuss the mod p irreducibility test. So let us start by writing the statement of this theorem, and this theorem is theorem 17.3 and it is mod p irreducibility test. ओके, तो हम ये देखेंगे कि जेड पी काइंड की इंटीग्रल डोमेन से हाउ कैन वी conclude about the irreducibility of a polynomial. So statement says let p be a prime and suppose that f of x is a polynomial whose coefficient are integers. That is, this is polynomial ring Z with degree of fx is greater than equals to 1. Now let this fx bar is the polynomial of the reduction of the coefficient of fx by modulo p. Okay, be the polynomial in Z P X obtained from f of x by reducing all the coefficient of f of x modulo p, and if fx bar is irreducible over zp and the degree of fx bar is same as the degree of fx, then this polynomial fx is irreducible over q. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं और उसके बाद इसकी प्रूफ की बात करेंगे। हमें गिवन है दैट p इज अ प्राइम और उस प्राइम के बाद वी आर कंसिडरिंग अ पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल की खास बात क्या है कि दिस इज अ पॉलिनोमियल फ्रॉम द रिंग ऑफ इंटीजर्स। ओके, मीन्स कोएफिशिएंट्स आर कमिंग फ्रॉम रिंग ऑफ इंटीजर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल p से हर एक कोएफिशिएंट को, जो भी पॉलिनोमियल है उसका हर एक कोएफिशिएंट को रिड्यूस कर रहे हैं विद द मॉड्यूलो p ऑपरेशन। ओके, रिडक्शन के बाद इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, बोथ ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर सेम, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। द अनदर कंडीशन इज कि रिडक्शन के बाद जो हमें पॉलिनोमियल मिल रहा है इट इज इरेड्यूसिबल ओवर zp, देन वी कंक्लूड दैट दिस पॉलिनोमियल fx मस्ट बी इरेड्यूसिबल ओवर q। हमने प्रीवियस थ्योरम में, दैट वाज 17.2, जो कि प्रीवियस लेक्चर का कंटेंट था, वहां पर हमने देखा था कि
क्यू पर रिड्यूसिबिलिटी से वी कैन इम्प्लाइज द रिड्यूसिबिलिटी ओवर जेड एक्स। ओके, यहाँ पर हम रिड्यूसिबिलिटी ओवर जेड पे से इम्प्लाइज कर रहे हैं इरिड्यूसिबिलिटी ओवर क्यू। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, और इसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, वो भी हम स्टेट करेंगे। सो लेट अस फर्स्ट राइट द प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट। सबसे पहले हम ये सपोज करेंगे दैट let P be a prime and f of x belongs to z of x. We are taking a polynomial whose coefficients are integers with degree of this polynomial fx is greater than equals to 1. Okay, now let, we are supposing that, okay, let fx bar be the polynomial in Zpx obtained from f of x by reducing all the coefficient of fx with modulo p. Okay, and further we are supposing that, and now let the degree of fx is same as the degree of fx bar, and let us call this as equation number 1, and what we are supposing that fx bar is irreducible over z p. ओके, अब इन सभी सपोजिशन के बाद वी नीड टू प्रूव कि क्यू पर भी ये रिड्यूसिबल है, बट व्हाट वी आर सपोजिंग दैट ऑन contrary we suppose that fx is reducible. ओके, हमें ये प्रूफ करना है कि fx irreducible है, जबकि इन सभी सपोजिशन के बाद व्हाट वी आर टेकिंग कि fx reducible है। अब अगर हमने ये सपोज किया है कि ये reducible है, इसका मतलब में कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिलना चाहिए। ओके, अगर ये q पर reducible ओवर q, अगर ये q पर reducible है, देन द प्रीवियस थ्योरम 17.2 वो हमें क्या बताती है कि अगर q पर reducible है तो ये z पर भी reducible होना चाहिए ओवर q, then from theorem, let me write 17.2. okay, from this then you can just go through this theorem 17.2, जब जहां पर हमने प्रूफ किया था कि अगर q पर reducible है तो वो z पर भी reducible होगा। ओके, reducible over q, then reducible over z2. okay, therefore we have fx as the product of two polynomial gx and hx, where this gx and hx are polynomial from this z. okay, where this is gx and hx both are polynomial of zx. तो जैसे ही हमने लिखा that fx is the product of two polynomials where these are coming from this one, अब हम ये कह रहे हैं कि ये reducible है। कब होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों का यूनिट ही हो, क्योंकि जब दोनों में से कोई एक यूनिट बन जाएगा और हम बात कर रहे हैं इंटीग्रल डोमेन की, तो उस केस में इनका डिग्री तो सेम ही रहेगा, मतलब एफ ऑफ एक्स का डिग्री या तो जी एक्स या फिर एच एक्स के सेम हो जाएगा। तो हमें ये केस एक्सक्लूड करने के लिए कि इन दोनों में से कोई भी यूनिट नहीं है, उसके लिए हम क्या कहेंगे, वेयर जी एक्स एंड एच एक्स बिलोंग्स टू दिस with degree of zx
is strictly less than degree of fx and degree of hx is strictly less than f degree of, we should write degree here, okay, degree of fx. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग राइट नाउ। जैसे हमने कहा कि ये रिड्यूसिबल है q पर, तो ये रिड्यूसिबल होगा z पर, तो ऐसे दो पोलिनोमियल हो सकते हैं जिनकी डिग्री स्ट्रिक्टली लेस देन है डिग्री ऑफ fx, और दिस इज द प्रोडक्ट, fx इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पोलिनोमियल्स, और यही हमें बताता है कि fx zx पे रिड्यूसिबल है। ओके, नाउ फॉर दीज fx, gx and hx, what we are taking now, let gx bar एंड hx बार, जैसे हमने fx बार को आइडेंटिफाई किया था वैसे इन दोनों के लिए भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो लेट gx बार एंड hx बार बी द पॉलिनोमियल्स इन z p x obtained from zx and hx. Let us use the word respectively by reducing all the coefficient of fx, not fx, all the coefficient of zx and hx modulo p। ओके, तो gx और hx के कोफिशिएंट को भी जब हम मॉड्यूलो p ऑपरेशन से रिड्यूस करेंगे तो उस केस में जो हमें रिजल्टेंट पॉलिनोमियल मिलेंगे उनको हमने डिनोट किया है gx बार और hx बार से। ओके, देन व्हाट वी आर हैविंग, देन fx bar must be equal to gx bar and hx bar. Okay, now what we have supposed that degree of zx is strictly less than degree of fx, right? but जब भी हम रिडक्शन करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का तो वी नो या तो डिग्री उतनी ही रहेगी या फिर उससे कम हो सकती है, right? so what we are having here, then this one, let me call this as equation number 2, but we have that degree of zx bar, this is less than equals to degree of fx, not fx, this is cx, degree of zx, and we know that degree of gx is strictly less than degree of fx, and here we have supposed that degree of fx and gx both are same, so what I note, degree of fx and fx bar both are same, so this is equals to degree of fx bar. Okay, that is degree of zx bar is strictly less than degree of fx bar, right? Let us call this inequality number 3, and what we have that degree of hx bar is less than equals to degree of hx, and we know that this is strictly less than degree of f of x, and which is equals to degree of fx bar, right? so what we are having, that is degree of hx bar is strictly less than degree of fx bar. Let us call this is 3. Okay, so from 2, 3 and 4, what we can say that, so from 2, 3 and 4, we see that fx bar can be written as product of two
polynomials from polynomials in ZPX with degrees degree less than the degree of एफ एक्स बार। मतलब एक पोलिनोमियल को अगर हम किन्हीं दो पोलिनोमियल की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं और दोनों पोलिनोमियल्स की डिग्री एफ एक्स बार के एफ एक्स बार की डिग्री के से अगर लेस देन, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज देन व्हाट वी कैन से, देन एफ एक्स बार इज reducible over ZPX, and which is not possible as we took that fx bar is irreducible. Okay, is irreducible over ZPX. Okay, at the initial we have supposed that fx bar is irreducible, we have supposed fx bar is irreducible over ZP. इसका मतलब ये ZP पर अगर हमें रिड्यूसिबल मिल रहा है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमने ऑलरेडी लिया हुआ है कि ये रिड्यूसिबल है. सो थर्स और सपोजिशन is wrong and hence fx is reducible was wrong, or we can write that this is irreducible over q. So we can write irreducible. Okay, otherwise I was writing that fx is reducible over q is not possible, hence fx is irreducible over q. ठीक है, so this is how we can identify the reducibility of a polynomial by looking at the irreducibility of the reduced polynomial over ZP. अब यहाँ पर जो खास बात थी कि यहाँ पर p क्या होगा, तो हमें जब भी पोलिनोमियल गिवन होगा तो हमें इस तरीके के पीस आइडेंटिफाई करने हैं, और अगर हमें एक भी ऐसा प्राइम नंबर p मिल जाता है जिसके लिए ZP पर हमारा पोलिनोमियल इररिड्यूसिबल है और डिग्री भी सेम है, तो वी कैन कंक्लूड दैट द ओरिजिनल पोलिनोमियल विल बी इररिड्यूसिबल ओवर q. ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, p को आइडेंटिफाई करना, दोनों की डिग्री सेम रहना और ZP पर इररिड्यूसिबल होना, क्योंकि हर एक प्राइम p के लिए ZP तो फील्ड है और फील्ड के लिए हमेशा reducibility check करना is very easy. Okay, so now let us look at some examples so that we can understand this statement and the proof. So we are having an example. This is example number 6. Okay, and this is important, और इसके बाद भी हम कुछ important conclusions के बारे में बात करेंगे. So discuss the reducibility. We should write the reducibility. Discuss the reducibility of fx where f of x is equal to 21 x cube minus 3x square plus 2x plus 9 and fx over q. ठीक है, so we can think about the irreducibility test, okay, with mod p. Now come to the solution. So what we are taking that, let f of x is equals to 21x cube minus 3x square plus 2x plus 9. Now let us choose first z equals to 2, p equals to 2, then you can think
p equals to 3, p equals to 4, and so on. So we are free to choose the value of p, and then you just apply the above statement. So let this and let p equals to 2, हम मोड 2 इरेड्यूसिबिलिटी टेस्ट को अप्लाई करेंगे. व्हेन वी चूज p इक्वल्स टू 3, देन इट बिकम्स मोड 3 इरेड्यूसिबिलिटी टेस्ट. ओके, देन we apply mod 2 irreducibility test. Okay, so how we can identify this test? सबसे पहले हम इसका रिडक्शन करेंगे. So let this and fx bar is equal to, just reduce this by 2, so it will be equals to 1x cube minus, this will be 1, so it is x square plus, for 2 this will be 0, so I'm writing 0 time x, and for this is being 1. Okay, now apart from this, we know what is the inverse, additive inverse of 1, that is 1, so that is also equals to x cube plus x square plus 1, right? So after the reduction, we are having x cube plus x square plus 1 and so on. Okay, so this is our first task, to reduce the polynomial. अब हम क्या करेंगे, ये वेरीफाई करेंगे कि क्या इन दोनों की डिग्री सेम है. तो सेकेंड स्टेप में व्हाट विल आइडेंटिफाई दैट डिग्री of fx that is equals to 3, and that is same is degree of fx bar. Now what we will identify, irreducibility over z2. तो क्या irreducible है, क्योंकि ये एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है. हमने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि जब भी 2 डिग्री और 3 डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं तो व्हाट वी कैन कंक्लूड कि फील्ड पर रिड्यूसिबल तब ही होंगे जब वहां पर रूट्स हों. अगर रूट्स नहीं है तो रिड्यूसिबल नहीं है, ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं. अब यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है रूट्स बनने की z2 पर, तो वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वी हैव ओनली 0 एंड 1. तो जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे वी आर हैविंग 1, जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे देन वी आर हैविंग 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, और z2 में 3 का मतलब है 1. तो दोनों ही केसेस में f of 0 और f of 1 दोनों ही 0 नहीं बन रहे. ओके, सो व्हाट वी कैन राइट दिस डिस्कशन एज दैट f बार 0 that is equals to 1 and f bar 1 that is also equals to 1. Okay, so we see that there is no 0 of fx bar in z2, और क्योंकि ये डिग्री 2 का है एंड डिग्री ऑफ fx bar is 3, so we can conclude that fx bar is irreducible over z2. Here in place of p we are having to z2 x, and the moment we have this, तो हम क्या conclude कर सकते हैं, this is our conclusion, that this is conclusion. And what is the conclusion, that then f of x is irreducible over q. So this is what we can conclude.